Hello everyone, welcome to the concept and fact of life sciences. Today in this video, we are going to discuss about the cell organelles. As we all know, the cell organelles, they can be broadly categorized into three different categories, which includes the single membranous cell organelles, double membranous cell organelles, and the cell organelles which do not have any kind of membrane around them. These are known as the non-membranous cell organelles. So if we talk about the single membranous cell organelles, where there is a presence of a single membrane around the cell organelle, it includes the Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, and the lysosome. If we talk about the double membranous organelle, जहां पे अपन कहते हैं कि दो झिल्लियां प्रेजेंट होती हैं कोशिकांग के चारों ओर, इसको अपन दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग भी कहते हैं. इट इंक्लूड्स माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड द न्यूक्लियस. अगर बात की जाए एनिमल वर्सेस प्लांट सेल की, तो अपन कहते हैं कि इन केस ऑफ एनिमल्स there is presence of only two double membranous organelles in the form of mitochondria and nucleus, because the animals, they are heterotrophic. There is an absence of plastid. But if we talk about the plant cell, they have all three types of double membranous cell organelles. Next category, it is of the non-membranous cell organelles. In our previous video, we have already stated that in case of prokaryote, there is an absence of membrane-bound cell organelles. So prokaryotes में सिंगल और डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स तो होंगे नहीं, बट द प्रोकैरियोट्स दे हैव सम नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स. फॉर एग्जांपल द राइबोसोम दे रिमेन प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स as well as in case of the eukaryotes. The prokaryotes, they have 70S type of ribosome, while the eukaryotes, they have 80S type of ribosomes. Some other cell organelles which are non-membranous, these are proteasome and the centriole. सो एक एक करके इन सब सेल ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करते हैं. स्टार्ट करते हैं अपन डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल से, और इसमें लेते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया को. The first thing which comes in our mind after hearing the name mitochondria is that the mitochondria, it is the powerhouse of cell. Now, why it is powerhouse of cell? Because 90 to 96% of your energy of the, or we can say, or the cellular energy is synthesized within the mitochondria. Now आप कहेंगे कि 90 to 96% क्यों, 4% कहां पे? Because it is not the only place where there is a ATP synthesis. ये केवल एकमात्र जगह नहीं है जहां पे ATP का synthesization होता है. Because the ATP synthesis, it also occurs within the cytoplasm. We can say it also occurs within the cytoplasm through a specific path which is called as the glycolysis. Okay, so glycolysis के through जो cytoplasm है वहां पे भी कुछ अमाउंट में ATP सिंथेसाइज होता है. Now what is glycolysis? इसके बारे में अपन पहले वीडियोस के अंदर बात कर चुके हैं, तो अगर आपको उसको कंप्लीट स्टडी करनी है ग्लाइकोलिसिस की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन की या क्रेब साइकिल की, तो आप मेरे पहले वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. यहाँ पे सिर्फ अपन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया केवल एकमात्र स्थान नहीं है जहां पे एटीपी सिंथेसिस होता है. एटीपी सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में भी होता है थ्रू द प्रोसेस व्हिच इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस. एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ ए 6 कार्बन glucose into the pyruvate. And as we all know that the glucose, it is a 6 carbon molecule, while the pyruvate, it is a 3 carbon molecule. So there is a breakdown of a 6 carbon molecule into the 2 molecules of 3 carbons which are known as pyruvate. Now during this process there is a synthesization of energy in the form of 2 ATP and 2 NADH. Okay, so ATP synthesis also occurs within the cytoplasm, but the end product, which is pyruvate, it is again transported into the mitochondria. समझ लेते हैं उस प्रोसेस को भी किस तरीके से होता है. केवल प्रोसेस को अपन समझ रहे हैं, पाथ यहां डिस्कस नहीं करेंगे अपन. Suppose this is the mitochondria having outer and the inner membrane. So this pyruvate, it is then translocated into the mitochondria. इसको ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है into the mitochondria.
The mitochondrial inner membrane have transporters for the pyruvate. Now, within the mitochondria, this pyruvate, it will get converted into the acetyl coenzyme A through the linkage reaction. Thereafter, there is an addition of a oxaloacetic acid, which is a 4-carbon molecule, onto this acetyl coenzyme A that lead to the formation of a citric acid. That leads to the commencement of another pathway which is known as Krebs cycle or the citric acid cycle. Now, during the process of this citric or the Krebs cycle, there is production of NADH, FADH, and at some place there is a production of GTP in case of animals, while there is a production of ATP in case of plant cell. Now, the mitochondrial inner membrane, they also have some proteins which are involved in the process of electron transportation chain, जिनके बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. There are some protein complexes which are generally involved in the process of electron transportation chain. Now, these NADH, FADH, they will give their electron. We can say the NADH, it will give their electron to the complex 1, while the FADH, it will give their electron to the complex 2. Now, the energy which is generated, that is due to the oxidation, that is the transportation of electron from one protein complex to the another protein complex. There is a transportation of H plus ion into the perimitochondrial space, the space between the outer and the inner membrane. इसको बोलते हैं perimitochondrial space. When these H plus ion, they comes down their concentrational gradient through a special type of ATPase which is known as F-type ATPase. During this, there is a conversion of a ADP into the ATP. So, the major place where there is a synthesization of ATP, the mitochondria, they have ability to convert the other form of energy, that is NADH and FADH, into the ATP. So, the major place where there is a synthesization of ATP, it is the mitochondria. ये समझना है अपने को. That's why we are stating that 90 to 96% of the energy it is synthesized within the mitochondria. But some amount of energy it can be synthesized within the cytoplasm through a specific path which is known as glycolysis. So आपसे पूछे तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन दो जगहों पे होता है, एक साइटोप्लाज्म में थ्रू द ग्लाइकोलिसिस और दूसरा कहां होता है विद इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स थ्रू द क्रेब्स साइकिल. और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्पेसिफिक चेन है दैट इज नोन एज ETC which carries out the oxidative phosphorylation. है ना. अब आप कहेंगे इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ क्या हो रहा है, पहले NADH और FADH अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देकर के ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, देन द इलेक्ट्रॉन दे विल मूव फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू another compartment, so there is a oxidation. Lastly, the energy of this oxidation, it will be converted into the process of phosphorylation, like there is an addition of an inorganic phosphate onto the ADP to form the ATP. So next process it is the phosphorylation. So that's why it is known as oxidative phosphorylation. Oxidation और phosphorylation दोनों हो रहा है, इसलिए अपन कह रहे हैं ये oxidative phosphorylation है, which occurs on the inner mitochondrial membrane. So this is all about the places of ATP synthesization. Now next thing is that there is a theory which is called as endosymbiotic theory. अभी endosymbiotic theory क्या है, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं अपन. Now what is endosymbiotic theory? Likewise, there was a primitive eukaryotic cell. As per the endosymbiotic theory, there was a primitive
यूकैरियोटिक सेल, एक कोई प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल थी। अब प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल क्यों बोल रहे हैं आप? इसलिए बोल रहे हैं कि उस सेल के पास में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। सो ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं अपन एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल को। It is the primitive eukaryotic cell which is having a well defined nucleus, means the nucleus with the nuclear membrane, and within the nucleus there is a presence of DNA or the genetic material. Now this primitive, as per the endosymbiotic theory, this primitive eukaryotic cell firstly engulfed the bacteria which is known as alpha proteobacteria, okay, which belongs to the category of alpha proteobacteria. So this primitive eukaryotic cell, it first engulfed, उसने निगल लिया किसको? अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया को। किस तरीके से बात कर लेते हैं एक बार। सपोज ये आपका अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया है एंड वी आर आल्सो हैविंग अ प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल। इस तरीके से कुछ जो सेल है अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया comes into the primitive eukaryotic cell, and again there is a formation of a membrane around this alpha proteobacteria, and it will comes into the cytoplasm of primitive eukaryotic cell in this way। देखेंगे कि ये primitive eukaryotic cell है, ये इसका न्यूक्लियस है, and we also have this alpha proteobacteria within the primitive eukaryotic cell which is now having two membranes। यहाँ समझने वाली बात यह है, this alpha proteobacteria now within the primitive eukaryotic cell, it now represents the mitochondria। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यहां क्या समझने की बात है? यहां समझने की बात यह है कि द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज ऑफ यूकैरियोटिक ओरिजिन। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन, while the inner membrane of this mitochondria, it is प्रोकैरियोटिक इन origin। वो कहां से आई है? वो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया से आई है। सो in this way there is a endosymbiosome, we can say there is an intake of the alpha proteobacteria by the primitive eukaryotic cell which leads to the formation of a mitochondria। Next thing which this primitive eukaryotic cell engulfed, it was a cyanobacteria। okay? फिर क्या किया इसने? एक cyanobacteria को खा लिया। cyanobacteria again it's a prokaryotic but they have ability to carry out the photosynthesis, है ना, वो ऑटोट्रॉफिक है। सो इस सेल को इनटेक करेंगे, प्रोसेस सिमिलर रहेगा। there is outer and the inner membrane, we have some stacks of thylakoids, and again there is a presence of prokaryotic DNA। so in this way there is a development of another cell organelle which is known as प्लास्टिड। सो इस तरीके से कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का ओरिजिन हुआ है बाय एनगल्फिंग द अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया एंड द साइनोबैक्टीरिया respectively, and this theory is known as endosymbiotic theory। it suggests that the mitochondria, it is originated due to the engulfment of a alpha proteobacteria। now in this alpha proteobacteria, it is रिकेट्सिया प्रोवाजाकी। ये क्या है? रिकेट्सिया प्रोवाजाकी। कैसे है अभी बात करेंगे जैसे इसकी। एंड द ओरिजिन ऑफ दिस प्लास्टिड, इट इज ड्यू टू द एनगल्फमेंट ऑफ ए साइनोबैक्टीरिया। सो दिस इज द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी व्हिच सजेस्ट अबाउट द ओरिजिन ऑफ दीस सेल ऑर्गेनेल्स फ्रॉम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सो दूसरी चीज यहां से अपन लेके चल सकते हैं कि विद इन द सेल एट 3 प्लेसेस वी हैव डीएनए। ठीक है, कहां कहां डीएनए होता है? एक तो आपके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए हो सकता है, सॉरी, वी हैव डीएनए विद इन द न्यूक्लियस।
we have mitochondria with DNA, and we also have plastid with DNA, but the DNA which remain present, or the nucleic acid which remain present within the plastid and the mitochondria, they are prokaryotic origin, while the nucleic acid, or we can say the DNA which remain present within the nucleus, it is eukaryotic in origin. ठीक है, तो यूकैरियोट्स डीएनए और प्रोकैरियोट्स डीएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में आगे अपन डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. अब बात निकल के ये आती है कि हाउ कैन यू से दैट कि द माइटोकॉन्ड्रिया इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया. कैसे कह सकते हैं? तो उसके सपोर्ट में कुछ एविडेंसेस चाहिए. तो क्या हुआ? द मॉडर्न बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी इट डिपेंड्स अपॉन द 16S rRNA सीक्वेंसेस. मतलब 16S rRNA सीक्वेंसेस को कंपेयर करके आप जो मॉडर्न बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी है, मॉडर्न प्रोकैरियोटिक टैक्सोनॉमी है, फाइलोजेनी है, उसको क्रिएट करते हैं. Why we are using this 16S rRNA sequences? Because these are the highly conserved sequences. So बहुत ज्यादा conserved sequences हैं. ठीक है. So the modern bacterial taxonomy depends upon the 16S rRNA, and when we compared the 16S rRNA of the mitochondria with other prokaryotes, then it suggests that it shows close similarity with the alpha proteobacteria that was Rickettsia prowazaki. तो उसकी सिमिलरिटी उससे देखने को मिली. इस बेसिस पे यू कैन से दैट द माइटोकॉन्ड्रिया इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया दैट वाज Rickettsia prowazaki. सो दिस इज ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. आगे बात करते हैं structure of mitochondria. Now the mitochondria is generally made up of two membranes, or we can say it is a double membranous cell organelle. There is a outer membrane, mitochondrial outer membrane, and we have mitochondrial inner membrane. So there is a mitochondrial outer and the mitochondrial inner membrane. If we talk about the mitochondrial outer membrane, it is not important at all regarding the functioning of the mitochondria, because this outer membrane it have large size porins, and these porins they allows the movement of molecule which is of around 60,000 kilodalton. So इतने बड़े पैसेजेस हैं कि ये इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि एक दीवार है, उसके अंदर खूब सारे आपने दरवाजे लगा दिए. सपोज कीजिए कि 1 किलोमीटर लंबी दीवार है और उसके अंदर आपने 200-300 दरवाजे लगा दिए, तो दैट पर्टिकुलर बैरियर इट नॉट रिमेन ए बैरियर. वो बैरियर होते हुए भी बैरियर नहीं है. सो वी कैन से दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज it is not a permeability barrier. There is a presence of porins in this membrane which allows the movement of molecule that is around 6,000 kilodalton. So it is not a permeability barrier. So permeability barrier नहीं है तो कोई functioning उसकी important है नहीं. Next अपन लेते हैं mitochondrial inner membrane. Now this outer membrane it is eukaryotic origin जैसा कि अपन अभी पढ़ा, while the inner membrane it is prokaryotic in origin. Now the inner membrane it is very much important. It is bacterial origin and it is very much important regarding the functioning of mitochondria. Now to increase the, अब कोई चीज important है, then we have to increase its surface area. So to increase the surface area it remain folded in the form of क्रिस्टी, है ना. वो क्रिस्टी के फॉर्म में फोल्डेड रहती है. इट इज जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाने के लिए. अब सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना है? बिकॉज वी नो दैट ऑन दिस माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ 5 important protein complexes which is involved in the process of electron transportation chain, which will carries out the oxidative phosphorylation, where there is a generation of energy from NADH and FADH in the form of ATP. So बहुत important है regarding the functioning of mitochondria, इसलिए folded रहती है in the form of cristae to increase the surface area. Now next point, have more protein than lipid. ये चीज अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में अपन ने कहा था
Depending upon the functioning of a membrane, the composition of lipid and protein can vary. और वहां पे अपन ने कहा था कि जो mitochondrial inner membrane है, there is a presence of 70% of the protein and 30% of the lipid approximately, because there is a requirement of more number of protein to carry out the electron transportation chain. इस तरीके के खूब सारे complexes जो हैं वो inner mitochondrial membrane के ऊपर present रहते हैं. There is a presence of 5 important protein complexes which carries out the oxidative phosphorylation. ये अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है. Now all reactions within the mitochondria they occurs under the aerobic condition. वो aerobic conditions के अंदर ही carry out होती हैं. So यहां पे क्या कंक्लूजन लेकर के जाना है? We have the mitochondrial inner membrane. It is very much important regarding the functioning of mitochondria. There is a presence of electron transportation chain. अपन ने बात की थी कि within the mitochondrial matrix there is a Krebs cycle through which there is a generation of energy in the form of NADH and FADH. And within the mitochondria, in case of animal cells, we also have a process which is called as beta oxidation of fatty acids. And the beta oxidation of fatty acid, it also generates the energy in the form of NADH and FADH. And the inner membrane, they have machinery by which they are able to convert this NADH, FADH into the ATP. The NADH, it will give their electron to the कॉम्प्लेक्स 1, जैसा कि अपन ने बात की थी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था. एंड द FADH इट विल गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू द कॉम्प्लेक्स 2, दैट इज द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स. व्हेन दीस इलेक्ट्रॉन they move from this complex 1 to the complex 2 through ubiquinone. There is a presence of ubiquinone which takes up the electron from complex 1 and 2 and will transfer these electron onto the complex 3. Then from complex 3 there is a transportation of electron to the complex 4 through a mobile carrier protein which is called as cytochrome C. So simply the ubiquinone, it is a derived lipid जैसा कि अपन ने वहां पे पढ़ा था, while the only mobile carrier protein of electron transportation chain, it is the cytochrome C which takes up the electron, which takes up the electron from the complex 3 and will transfer these complex to the cytochrome oxidase enzyme complex. Then from cytochrome oxidase, then there is a transfer of the molecules onto the oxygen which will make the water molecule. So in this way there is an electron transportation which occurs onto the inner mitochondrial membrane. Through the energy from this electron transportation or the oxidation, there is a movement of H plus ion like 4H plus ion through the complex 1. जो complex 2 है, it is not a transmembrane complex, तो यहाँ से H plus ion का transportation होता नहीं है. complex 3 से 4 और complex 4 से भी 4 H plus ion, they moves into the perimitochondrial space. The perimitochondrial space, it is the perimitochondrial space, the space between the outer and the inner mitochondrial membrane, उसको बोलते हैं perimitochondrial space. तो वहां पे H plus ion translocate होते हैं. When these H plus ion they comes back into the mitochondrial matrix through a specific type of pump which is known as F type pump, जिसके बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं पहले अपने लेक्चर्स के अंदर. F type pump, the F type pump, they have characteristic to generate the energy by using the proton gradient. ये क्या करते हैं, जो proton gradient का movement होता है from higher to the lower concentration, this gradient is utilized to add inorganic phosphate onto the ADP to form the ATP. So जो भी एनर्जी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनी इन द फॉर्म ऑफ NADH, FADH, क्योंकि अपने को पता है सेल के अंदर एनर्जी करेंसी क्या है, ATP है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस एनर्जी करेंसी इनटू द usable form, and the usable form is ATP, and for this we have a important transportation chain which occurs on the inner mitochondrial membrane, that is called as electron transportation chain. So यहाँ पे ये समझने वाली बात थी, एक तो इसका स्ट्रक्चर अपन ने समझ लिया,
it is a bi-layered, or we can say double membranous cell organelle. We have outer and the inner membrane. We have this part is called as mitochondrial मैट्रिक्स, इसे अपन कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. जो क्रेब साइकिल है या बीटा ऑक्सीडेशन है, इट अकर्स विद इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. On inner mitochondrial membrane, there is a presence of 5 important protein complex. That's why if we talk about the composition, there is more amount of protein on it. These complexes, they are involved in the process of electron transportation chain, which will carry out the oxidative phosphorylation that lead to the formation of ATP from FADH and the NADH. So this is all about the, we can say, structure and some of the functions of the mitochondria. Now next we take the mitochondrial genome. There is a term that is called as the chondrion. There is a term which is known as chondrion, and the chondrion is the net mitochondria which remain present within the cell. उस सेल के जो सभी माइटोकॉन्ड्रिया है, there is a presence of many mitochondria within a single cell. So net जो आप कह सकते हैं नंबर है, net number or we can say complete number of mitochondria which remain present within the cell, उसको अपन कहते हैं chondrion. Next is the mitochondria. It contains the bacterial genetic material. ये अपने को पता है, ये भी अपन ने देखा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से कि किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन हुआ है in eukaryotic cell. So the mitochondria, it contains the bacterial genetic material. And in case of the prokaryote, as we all know that the DNA, it is double stranded circular. जबकि यूकैरियोट्स में कैसा होता है, it is double stranded linear DNA, while the prokaryotes, they have double stranded circular DNA. Now in case of the yeast, the size of mitochondrial genome is 75 to 85 kilobase pair. While if we talk about the human, the size is only 16.5 kb. तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहे हैं, जो साइज है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम की, ये कम हो रही है. नाउ दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन, इट इज कॉल्ड एज द रिडक्टिव इवोल्यूशन. इसको अपन कहते हैं, इट इज द रिडक्टिव इवोल्यूशन, वेयर वी आर ऑब्जर्विंग द लेसर साइज ऑफ mitochondria during the course of evolution. The human, they have only 16.5 kb of mitochondrial DNA size, while in case of yeast, the mitochondrial DNA is around 75 to 85 kb. Now if we talk about the humans, in within this 16.5 kb, अब आप कहेंगे कि larger genome size का मतलब ये है कि वो larger number of proteins कोड कर रहा है. नहीं, ऐसा नहीं है. आगे अपन पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर कि larger DNA size, it doesn't mean that it will code for the large number of protein, because there is a presence of some non-coding regions. वहां पे non-coding regions इंट्रॉन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, so that's why they have larger genome size simply. So in case of human, we can say within this 16.5 kb we have 13 protein coding genes. There is a presence of 22 tRNA coding genes and the 2 rRNA coding genes. ठीक है. If we talk about the ribosomes which remain present within the mitochondria, as we know that it is prokaryotic in origin, the mitochondria in the, we can say the ribosome within the mitochondria, in case of the mammals, it is 55s. The larger subunit is of 39s, while the smaller subunit is of 28s. While in case of plant, we have 78s of ribosome in case of mitochondria, where the larger subunit is of 50s, while the smaller subunit is of 33s. Okay? So this is all about the mitochondrial genome. We have started with the chondrion, that is, we can say, complete number of mitochondria which remain present within the cell, and we have double stranded circular DNA. During the course of evolution, there is a reduction in the mitochondrial genome size, which is called as reductive type of evolution. There is a presence of these types of genes on the human mitochondrial genome. Now the plant versus animal mitochondria कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि plants और animal के mitochondria में क्या differences है. If we talk about the number, so number of mitochondria, it is higher in case of animals as compared to the plants.
number of mitochondria per cell, it is higher in animals because the animals they are mobile while the plants they are sedentary. वो एक ही जगह पर रहते हैं, एनिमल मोबाइल होते हैं, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो नंबर इज ग्रेटर. इफ यू टॉक अबाउट द जीनोम साइज, तो जीनोम साइज अपने को ज्यादा देखने को मिलता है इन केस ऑफ प्लांट दैट अराउंड स्टार्ट्स विद अराउंड 200 किलो बेस पेयर, है ना, 2000 किलो बेस पेयर तक जा सकता है. सो द साइज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम इट इज higher or larger in case of plants. Again, it doesn't mean it codes for larger number of protein because they have more number of non-coding repetitive sequences. जिसके बारे में आगे अपन क्लियर करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब बात करेंगे तब. नाउ नेक्स्ट इज द बीटा ऑक्सीडेशन. अपन ने कहा द बीटा ऑक्सीडेशन इट अकर्स within the mitochondria in case of animals. In case of animals, the beta oxidation it occurs within the mitochondria, while in case of plant, the site for the beta oxidation is peroxisome. ठीक है, वो है peroxisome, that is specific type of peroxisome which are known as glyoxysomes, जिसके बारे में आगे अपन बात करेंगे जब अपन प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे. यहाँ सिर्फ इतनी समझने की बात है कि बीटा ऑक्सीडेशन एनिमल्स में कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्लांट्स में होता है peroxisome. एंड इफ यू वांट टू स्टडी कंप्लीट प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, वी ऑलरेडी हैव अ वीडियो ऑन आवर चैनल ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन. Now, we have some exceptions, like the exceptions are always there in case of the biological system in the form of kinetoplastids. Now, these kinetoplastids, these are simply the flagellated protists, है ना? These are the flagellated protists. And in the case of these flagellated protists, the mitochondrial genome, it will not remain in the intact form. It remain present in the form of maxi circles and the mini circles. Like it remain present in the form of large circles and the small circles. As we already stated that the mitochondria it have double stranded circular DNA. There is a presence of double stranded circular DNA because the DNA it is of prokaryotic origin. Now, in case of these kinetoplastids, flagellated protists, the mitochondrial genome it remain in the form of maxi, yani larger circles, and the mini, that is called as the mini circles. Now, the size of maxi circles it is around 20 to 40 kb, while the size of mini circles is around 1 to 10 kb. These mini circles they generally code for, we can say they generally code for a guide RNA, and this guide RNA they generally we can say help in the processing of these maxi circles. जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है उसकी प्रोसेसिंग के अंदर हेल्प करते हैं दीज गाइड आरएनए व्हिच इज एनकोडेड बाय द मिनी सर्कल्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट वी हैव टेकन द सेमी ऑटोनॉमी. सेमी ऑटोनॉमी मींस द माइटोकॉन्ड्रिया इट इज नाउ नोन एज द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल. फर्स्टली इट वाज नोन एज द ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, but now it is a semi-autonomous organelle because it also depends on the nucleus for their sum of the protein, है ना. अपने कुछ प्रोटीन्स के लिए न्यूक्लियस पे भी डिपेंड करता है. समझने की कोशिश करते हैं इसको. सपोज कीजिए ये सेल है एंड वी हैव न्यूक्लियस have their own DNA. There is a presence of mitochondria, and this mitochondria it also have their own DNA. So खुद का जेनेटिक मटेरियल है तो ऑटोनॉमी होनी चाहिए, खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं. बट द माइटोकॉन्ड्रिया जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे देखा गया कि इट स्टार्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस फॉर देयर सम ऑफ द. खुद के सारे प्रोटीन नहीं बना रहा था. कैसे बात करते हैं, होता क्या है सेल के अंदर, डीएनए से बना mRNA it occurs within the nucleus through a process which is called as the transcription. Now this mRNA transcripts they comes out into the cytoplasm. Okay, there is a binding of some ribosomes on it. There is a synthesization of protein, and this protein it comes into the cytoplasm, okay, in the form of a polypeptide. Now, the mitochondria they also have ability, it is prokaryotic origin, do not have the membrane around the genetic material.
It will form the mRNA within the mitochondria. Within the mitochondria, it can form the protein through the process of translation. So they have ability to synthesize their own protein. But some of the proteins for the functioning of mitochondria, it they have to procure from the cell cytoplasm that was encoded by the nuclear genetic material, that is chromatin. So we can say that the mitochondria, it depends upon nucleus for their some of the protein. Generally ज्यादातर protein वो खुद synthesize कर लेता है, but some of the vital protein it also depends upon the nucleus. इसलिए अपन कहते हैं the mitochondria, it is a semi autonomous organelle. It is not a autonomous organelle, it depends upon nucleus also. ठीक है, so this is all about the semi autonomous. नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस की, तो वही अपन डिस्कस कर लेते हैं इसको. मैटरनल इनहेरिटेंस, द माइटोकॉन्ड्रिया इट शोज द यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस. ओके, इट शोज द यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस केवल एक ही साइड से, यानी कि जो मदर या मैटरनल साइड है वहीं से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो नेक्स्ट जनरेशन में दिया जाता है. कैसे, अभी जस्ट बात करेंगे इसके बारे में. नेक्स्ट अपन कहते हैं इट आल्सो शोज द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. मींस दिस यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस इट इज आल्सो नोन एज द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अपन क्या देखते हैं, देयर इज ए स्पर्म सेल एंड देयर इज ए एग सेल. ठीक है, आगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अपन बात करेंगे. सपोज इट इज ए स्पर्म सेल एंड इट इज द एग सेल. जो स्पर्म सेल है इट जनरली डोनेट्स ओनली द न्यूक्लियस. वो क्या डोनेट करता है, न्यूक्लियस. while the egg cell it donates nucleus or it contributes nucleus as well as its cytoplasm. है ना. होता क्या है कि जो स्पर्म का न्यूक्लियस है इट इज transported into the egg cytoplasm after during the process of fertilization. ठीक है, and then there is a formation of zygote, the mating of these gametes, that is male and the female gametes. Now this process it occurs within the egg cytoplasm and the mitochondria it is the part of cytoplasm. और mitochondria किसका पार्ट है, साइटोप्लाज्म का पार्ट है. तो अपन कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज ऑलवेज डोनेटेड, वी कैन से ऑलवेज तो नहीं कह सकते, एक्सेप्शंस आर देयर, बट इट इज जनरली डोनेटेड फ्रॉम द फीमेल साइड. तो इसीलिए क्योंकि ये फीमेल साइड से डोनेट हो रहा है इसलिए क्या है यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस, यानी केवल और केवल फीमेल साइड से ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा. नेक्स्ट इसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पार्ट है साइटोप्लाज्म का एंड द साइटोप्लाज्म इट्स जनरली डोनेटेड बाय द female side. So it shows the uniparental inheritance, it shows the cytoplasmic inheritance. कैसे होता है ये अपन ने बात कर ली और डिटेल में इसको पढ़ेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर. तो इसको अब हटा देते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. सपोज कीजिए ड्यू टू द नॉन फंक्शनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज ए डिजीज व्हिच इज नोन एज लेबर ऑप्टिक न्यूरोपैथी. जनरली क्या होता है, विजनरी प्रॉब्लम्स विजन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. जो आपके ऑप्टिक नर्व है दैट कनेक्ट्स द आईज टू द ब्रेन, वो कहीं पे डैमेज हो जाती है. दैट इज कॉल्ड द डिजीज कंडीशन इज कॉल्ड एज लेबर ऑप्टिक न्यूरोपैथी. एंड दिस लेबर ऑप्टिक न्यूरोपैथी इट इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया. सपोज कीजिए वी हैव टेकन फीमेल which is normal and taken male which are suffering from labor optic neuropathy. ठीक है, ये आपने क्रॉस कराया. तो आप देखेंगे कि इन द प्रोजेनी all the progenies these are normal. ठीक है, और अगर आपको रिवर्स कर दें इन पेरेंट्स को और फिर टेस्ट कराएं, क्रॉसिंग कराएं, तो क्या होगा, यू हैव टेकन द फीमेल विच इज सफरिंग फ्रॉम द लेबर ऑप्टिक न्यूरोपैथी क्रॉस्ड विद द मेल विच इज नॉर्मल. तो आप क्या देखेंगे, हियर ऑल द प्रोजेनीज दे आर सफरिंग फ्रॉम LON
or the labor optic neuropathy. So in case of cytoplasmic inheritance there is all or none phenomena, या तो सारी की सारी डिजीज होंगी या सारी की सारी नॉर्मल होंगी, यानी यहाँ पे हाफ डिजीज हाफ नॉर्मल वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। क्या हो रहा है, अगर आपने फीमेल नॉर्मल ली, फीमेल नॉर्मल है, इट मींस कि जो साइटोप्लाज्म है फीमेल डोनेट करेगी, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो फीमेल साइड से आएगा, तो फीमेल साइड में जो माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज नॉर्मल बिकॉज दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम द लेबर ऑप्टिक न्यूरोपैथी, मेल्स दे आर सफरिंग फ्रॉम लेबर ऑप्टिक न्यूरोपैथी, बट since it is donated, it is given by the cytoplasm, given through the cytoplasm of female, all the progenies they are normal, वो normal आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप चेंज करेंगे कंडीशन को, फीमेल ऐसा ले लिया जो है क्या है लेबर ऑप्टिक न्यूरोपैथी डिजीज कंडीशन में है, और मेल है वो नॉर्मल है, तो सारी की सारी प्रोजेनिस आपको कैसे देखने को मिलेगी, डिजीज वाली देखने को मिलेगी, बिकॉज इट इज डोनेटेड फ्रॉम दिस फीमेल साइड, दैट इज ए यूनिपेरेंटल inheritance. So mitochondria, it shows the maternal inheritance, it comes from the maternal side, that is also called as uniparental inheritance, that is inheritance from a single parental we can say parental side, that is maternal side, and it is also known as cytoplasmic inheritance because the mitochondria it is the part of cytoplasm. Now next we also have some exception, likewise जैसा हम पहले ही कह चुके हैं, in biological system there are exceptions, and the exception is biparental inheritance which is observed in case of plants like Mirabilis jalapa and fungi, जहां पे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं साइटोप्लाज्म को। नेक्स्ट इज द पैटर्नल इनहेरिटेंस, कहीं जगह पे जहां पे अपन कह सकते हैं इन सम स्पीसीज ऑफ सी अर्चिन द पैटर्नल साइड और वी कैन से फादर साइड जो होता है, मेल साइड जो होता है, इट डोनेट्स और इट कंट्रीब्यूट्स द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एज पैटर्नल इनहेरिटेंस। तो वहां पे जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी, बट इन जनरल द माइटोकॉन्ड्रिया इट शोज द मैटरनल इनहेरिटेंस, और कैसे होता है वो अपन ने यहाँ पे बात कर ली। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं phylogenetic relationship. Now this mitochondria it is used to establish the phylogenetic relationship also. ऐसा क्यों? Because it shows the uniparental inheritance. वो क्या शो करता है? It comes only from the we can say female side. एक uniparental inheritance होता है इसका. So the variations which are in the mitochondrial genome, the variations in mitochondrial genome, it is only due to the mutations. वो केवल और केवल किससे आएगी? म्यूटेशन से आएगी, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर वहां पे कुछ वेरिएशंस आ सकती है, बट सिंस इट इज शोइंग द यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस, वहां पे केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, वहीं से वो ट्रांसमिट हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में। सो द वेरिएशंस दे आर ओनली ड्यू टू द म्यूटेशंस, सो दीज आर यूज्ड, दीज आर कंजर्व्ड, दैट कैन बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। So the variation here they are only due to the mutations. So these can be used, this genome can be used, that is mitochondrial genome, for establishing the phylogenetic relationship between the organism. ये चीज भी अपने को याद रखनी है। Next एक important चीज ले लेते हैं, there is a presence of a specific type of phospholipid on the mitochondrial inner membrane, and this is called as the cardiolipin. Now this cardiolipin, it is a unique phospholipid which only remain present or exclusively remain present on the mitochondrial inner membrane. This cardiolipin it facilitates the energy production through the process of electron transportation chain. Means electron transportation chain उतनी efficient नहीं हो पाएगी if there is an absence of this cardiolipin onto the inner mitochondrial membrane. So it facilitates the electron transportation. It helps in the mitochondrial fission. As we all know that the mitochondria reproduce through the fission process. There is a breakdown of one mitochondria into the two, जिसके बारे में आगे अपन बात करेंगे. So this fission process it also helps in the signaling process. It helps in the process of mitophagy. Now what is mitophagy or mitophagy? It means it is the selective removal of damaged mitochondria from the cell. It is the selective removal of damaged mitochondria from the cell, and in this process it is through a protein that is called as LC3. ठीक है, जिसके बारे में आगे अपन बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. So
In mitophagy, they also help, these cardiolipin, they also help in the process of mitophagy. Now if we talk about the structure of these cardiolipin, आपने कहा यूनिक है, फॉस्फोलिपिड है, सो यहां पे क्या होता है, वी आर हैविंग टू फॉस्फेटिडिक एसिड, हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन फॉस्फेटिडिक एसिड and there is a presence of another phosphatidic acid. Phosphatidic acid अपने को पता है, it is the glycerol plus phosphate having two fatty acid chain, ठीक है। तो ये आपका ग्लिसरॉल CH2 CH CH2 OH पे दो लगी हुई हैं आपकी फैटी एसिड्स, है ना। एक बार थोड़ा सा आप स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे तो वहां पे ये फॉस्फेटिडिक एसिड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो वी आर हैविंग टू फॉस्फेटिडिक एसिड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉस्फेटिडिक एसिड विच इज हैविंग ग्लिसरॉल, टू फैटी एसिड एंड ए फॉस्फेट, एक साथ में क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। सिमिलरली यहां पे भी क्या है, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल, ये आपका ग्लिसरॉल, there are two acyl chains and there is a presence of phosphate, that is called as phosphatidic acid. So in this structure we are having two phosphatidic acid that remain attached to a glycerol molecule, जो अटैच रहता है किससे, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से। ये इसका स्ट्रक्चर होता है किसका, कार्डियोलिपिन का, एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑन माइटोकॉन्ड्रियल inner membrane. So this is all about the mitochondria. In our next lecture we will discuss about the plastid. Thank you very much.